नमस्कार। आर के त्यागी, NCR, दिल्ली गाजियाबाद। ओम सच्ची जनवाणी चैनल पर आपका स्वागत है, हार्दिक स्वागत है। वार्मली वेलकम एंड cordially welcome. Please subscribe YouTube channel Om Sachi Janwani Name and share the video as much as possible. Like and comment the video. By sharing the video more and more, it is to propagate our views, news and issues of retirees, to motivate and mobilize retiree friends, to propagate our views, news and issues in all sections of society, all sections of political parties, all sections of our retiree friends, and to the government and public at large, so as to take some view on our views and issues. ये गवर्नमेंट की आईटी डिपार्टमेंट और पॉलिटिकल पार्टीज की आईटी डिपार्टमेंट, पर्टिकुलरली बीजेपी का आईटी डिपार्टमेंट सोशल मीडिया को खंगालता है और उसमें पड़े हुए चीज़ों को उनको देखता है कि भाई ये क्या है क्या नहीं है। सभी चीज़ों को देखकर परख कर उन पर डिसीजन भी लेते हैं। जितने ज़्यादा हमारे इश्यूज प्रोपोगेट होंगे तो वहाँ तक जाएंगे, यही भावना रहती है। इसीलिए हम शेयर करने के लिए कहते हैं। शेष ये कि आज मैं एक लेटर लिख रहा हूँ मैडम निर्मला सीतारमण को, उसको आपको बता देता हूँ पढ़कर के। टू श्रीमती निर्मला सीतारमण, ऑनरेबल फाइनेंस मिनिस्टर, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, नई दिल्ली। रेस्पेक्टेड मैम, pensioner imbroglio, you are respectfully requested to kindly take note of the plight of bank pensioners and provide them pension updation on RBI line, which is the position accepted and committed in the pension agreement dated 29 October 1993. We have found that there are a number of conflicting views regarding pension updation, including its cost effectiveness, solely aimed at depriving pensioners of their rights entitled under the pension agreement 1993 regulations 1995, a very unclear and ambiguous situation continuous with uncertainties hanging over pensioners. Your kind judicious consideration and intervention is required. One's right cannot be denied or money. Please, the responsibility of the funding lies on the banks, and it is their contractual obligation to revise the pension of bank pensioners on the RBI line. The pensioners have fulfilled the condition of the pension agreement by surrendering their CPF. It does not suit the banks to run away from their contractual responsibilities. In this regard, we would like to request you as under. Number 1, the government should appoint two different and independent actuaries to assess two important aspects. 1, the adequacy of existing pension funds, and 2, in case of pension updation of RBI line, what will be the need for additional financial contribution to pension funds. Till date, no such official step has been taken by the banks, and if it has been taken, then it cannot be trusted. Banks and IBAs have lost their credibility. Pensioners have been kept in dark and deceived till date. Number 2, according to our estimate, in case of pension updation on RBI line, the gross annual pension expenditure may increase by about 25%, because the average increase has been the same as in Reserve Bank. According to this estimated increase, the pension expenditure will be more about 4,500 crore per annum, which will need appropriate financial contribution to the pension funds. The additional funding requirement can be amortized for 5 years as done in past.
This is a common procedure which has been adopted by banks and approved by the Reserve Bank many times in past. Number 3. Banks have not deposited many liabilities to pension trust. It is said that banks pass the financial burden of special VRS on pension funds, which was wrong. The pension of executive directors are paid from pension funds even though they are not bank employee. They are used to be provision in every wage revision agreements in the name of loads on pension funds which have never been transferred to pension funds. The estimated burden of the second pension option was 6,600 crore, of which 2,600 crore was recovered from the pensioner and put into pension funds, but the remaining rupees 4,000 crore at their share bank did not put into the pension fund. Number 4. Bank pensioners feel that banks and IBAs are colluding to resort to false and misleading financial data to deny the entitlement to the pension updation. They have had skipped from many of their liabilities to pension funds. In the event of pension updation, they have been creating the myth of huge financial contribution. Operating unions have been in league with them in this matter. Pensioners continue to be ignored, and since the nationalized banks are owned by the government, it is obvious that the pensioners look towards the government with hope. If the government is silent, then it is natural that all the blame ultimately falls on the government. Therefore, you are requested that the Finance Ministry itself should appoint 2 actuaries for assessment of pension funds. The independent actuaries and additional financial requirement in case of pension updation. Financial status has nothing to do with the pensioners' entitlement to pension updation. Financial assessment is an internal matter of banks. Pensioners are concerned about their rights, which the banks are reluctant to give, due to which the pensioners are angry. We hope that the government will take cognizance of the pitiable condition of bank pensioners due to lack of pension updation since 1986 on humanitarian grounds, and will be pleased to revise their pension on RBI line at an earliest. Respectful regards, R.K. त्यागी, पेंशनर बैंक पेंशनर एक्टिविस्ट, गाजियाबाद। तो एक तो ये मैंने बताया, ये लेटर में लिख रहा हूँ। एक हमारे मिस्टर आर के वर्मा ने एक भेजा है मेरे पास, वो उन्होंने थोड़ा सा दिया है, वो मैं और सुना देता हूँ। ये तो मैंने अपना भेजा है, और ये मैंने एक और लेटर लिखा था जिसे जे.एन. शुक्ला जी हैं इलाहाबाद के, उन्होंने थोड़ा सा इस तरह से चेंज कर दिया, और मैं इसको इस तरह से लिख रहा हूँ। अब ये जो अच्छा नंबर 1 इन्होंने राजकुमार वर्मा जी ने, आर के वर्मा सहारनपुर से, सीनियर एक्टिविस्ट हैं, हमारे कोर कमेटी के मेंबर हैं। नंबर 1, ड्यूरिंग 2022 to 2023 estimated expenses details of pension updation were given by me to IBA as 6,600 crore. Number 2, surplus in pension fund taking all banks together after paying the then liability of all type of pension was about 4,800 crore approximately. Number 3, requirement of funds for updating on RBI lines was 6,600 minus 4,800 is equal to 1,800 crore only for all banks. Number 4, additional investment in funds as of April 23 was to be provisioned to 22,500 crore to get the income of 1,800 crore. So additional load was 1,800 crore, not 1 lakh crore as now said by Mr. Bandlis and company. Number 5, for the additional investment of 22,500 crore, banks have 5 years gestation period, that is per year required additional investment will be 4,500 crore. Please note, it is not expenses, it is investments. Number 6, had banks contributed their share in 2010 at the time of second pension option at the rate of 70% as was agreed, which
is being calculated 4,000 crores. The present requirement would have been zero because in the past 14 years the amount had been equal to current requirement. It would have been approximately 17 to 18,000 crore after interest. Whatever statement are in air either by IBA or DFS or UFBU or Mr. C.H. Venkatachalam or Mr. Sanjeev Bandlis are very wrong and misleading. R.K. वर्मा सहारनपुर ये था। साथियों एक अच्छा, मैंने आपको ये बात पहले ही बता दी थी। गिरीश आर्या जी ने जो IBRWA का धरना है उसमें आने की अपनी मंजूरी दे दी थी, उसका लेटर भी है मेरे पास। और ये इन्होंने शुक्ला जी ने, JN शुक्ला जी ने भी कंफर्म किया है। मैंने भी इनके पास लेटर भेजा था। भारतीय मजदूर संघ ज्वाइंस पेंशन मूवमेंट विल ग्रीट एंड ड्यूपोर्ट जंतर मंतर धरना। श्री गिरीश आर्य जी, नेशनल सेक्रेटरी एंड फाइनेंशियल सेक्टर इंचार्ज भारतीय मजदूर संघ, हैज एग्रीड टू ज्वाइन द प्रपोज धरना ऑफ पेंशनर्स टू बी ऑर्गेनाइज्ड एट 21 जनवरी 2024 एट जंतर मंतर टू सपोर्ट द बैंक पेंशन अपडेशन। इसमें कोई चेंज भी आ सकती है क्योंकि 26 जनवरी का है वहाँ पे और अयोध्या वगैरह का कार्यक्रम से हो सकता है, देखो अभी पता लगेगा। वी आर अटैचिंग हिज कंसेंट लेटर इंग्लिश एंड हिंदी बोथ बिलो। ही call upon all pensioners of NCR. We call upon all pensioners of NCR and other nearby cities to prepare themselves to participate in said dharna. Take out a note for the pensions community. We have contacted Sri K.D. Kheda, like senior leader, also with request to join the protest and address it. JN शुक्ला, नेशनल कन्वीनर। ये और इन्होंने नंबर दिया है, हिंदी में भी इन्होंने ये लिखा है और फिर इन्होंने फिर वो भी लेटर भेज दिखाया वो जो उन्होंने दिया था गिरीश आर्य ने। मैं पढ़ के एक बार इसे भी सुना देता हूँ, हालांकि मैंने पहले बता रखा है आप लोगों को। ये है श्री RS शर्मा, मानद सचिव AIBRWA दिल्ली। इनका मेल है। आदरणीय भाई शर्मा जी, जंतर मंतर नई दिल्ली पर पेंशनर्स के प्रस्तावित धरने में मुख्य अतिथि बनने के निमंत्रण के साथ आप संदेश पाकर मुझे बहुत खुशी हुई। केवल अतिथि बनने के बजाय न्याय के लिए आपकी लड़ाई का हिस्सा बनना मेरे लिए खुशी की बात है। BMS में हमेशा सेवानिवृत्त लोगों की भलाई के लिए चिंतित रहते हैं, इसलिए हम उन बैंक पेंशनरों के मुद्दों को मजबूती से उठाते रहे हैं जो अपने वैध अधिकारों से वंचित हैं। पेंशनर एक्टिविस्ट के सम्मिलित प्रयासों के कारण 2016 से पिछले 2-3 वर्षों में कुछ प्रमुख सफलताएं मिली हैं, जैसे पारिवारिक पेंशन की सीमा को हटाना, 1986 से पहले के सेवानिवृत्त लोगों को अनुग्रह राशि में सुधार, पूर्व नवंबर 2002 के पेंशनर्स के लिए 100% DA न्यूट्रलाइजेशन, त्यागपत्र देने वालों को पेंशन का विकल्प और वेतन संशोधन पर हालिया सहमति पत्र जो दिनांक 7 दिसंबर 2023 को किया गया, जिसमें 31/10/2022 तक पेंशनर्स को अंतरिम राहत के रूप में अनुग्रह राशि पेशकश की है। RBI लाइन पर पेंशन अपडेशन का काम अभी बाकी है। मासिक अनुग्रह राशि को सकारात्मक रूप से लेने की जरूरत है। RBI लाइन पर पेंशन अपडेशन का मुख्य कार्य अभी विलंबित है। जब तक यह हासिल नहीं हो जाता तब तक संघर्ष और प्रयास जारी है। बैंकिंग में हमारे सहयोगी संगठन NOB और NOBW कार्यरत और सेवानिवृत्त बैंक कर्मियों के मुद्दों को उठाने में सबसे आगे रहे हैं और मुझे विश्वास है कि सक्षम नेतृत्व के साथ सभी पेंशनरों के लिए उचित न्याय सुनिश्चित करेंगे। कृपया सभी बैंक पेंशनर्स के लिए न्याय की मांग करने वाले आंदोलन में BMS को अपना भागीदार माने। अनुग्रह राशि न तो पेंशन अद्यतनीकरण का विकल्प है और न ही
MOU अंतिम है। हम बैंक पेंशनरों से वादा करते हैं कि जब तक RBI की तर्ज पर पेंशन अपडेशन नहीं होता तब तक संघर्ष और प्रयास जारी रखेंगे। साथ ही हम सभी पेंशनर से एकजुट होकर इस चुनौती का सामना करने का आह्वान करते हैं, चाहे कुछ भी हो। कृपया हमें धरने की तारीख और समय पहले बता दें। बधाई, शुभकामनाएं। आपका भाई गिरीश चंद्र आर्य, राष्ट्रीय सचिव एवं वित्तीय क्षेत्र प्रभारी, भारतीय मजदूर संघ। प्रति JN शुक्ला, राष्ट्रीय संयोजक, फोरम ऑफ बैंक पेंशन एक्टिविस्ट। सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु ये था। तो धन्यवाद साथियों। सभी बैंक पेंशनर एक्टिविस्ट और रिटायरी साथियों को, रिटायरी लीडर्स को नमन, सल्यूट और क्रांतिकारी अभिवादन। सभी लोग स्वस्थ, संपन्न और प्रसन्न रहें, मंगलमय रहें से परिवार। भारत माता की जय। वंदे मातरम। जय भारत। जय सनातन समाज संस्कृति। ओम ब्रह्मा विष्णु महेश। ओम नमः शिवाय। जय हो। RK त्यागी का जवाब।